नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और सॉरी अबाउट द डिले, देर से आरंभ करने के लिए आपसे क्षमा, क्योंकि राजीव जी इज ट्रैवलिंग, तो इसलिए थोड़ा सा कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं। उससे मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग बहुत चिंतित हैं, पीपल आर वेरी वरीड, and that is about the new Chief Justice of India who's set to take over on the 8th of November. 8 नवंबर को नए CJI साहब आएंगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है। वो क्या है और उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं राजीव मल्होत्रा जी और विजय विश्वनाथन जी। उनके साथ हमने अभी आप कुछ ही दिन पहले स्नेक्स इन द गंगा हमने रिव्यू किया था, वी रिव्यूड देयर बुक, और उसमें जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले पर आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में राजीव जी कुछ इंट्रो देंगे, उसके बाद फिर हम जो क्लिप्स हैं उनकी चंद्रचूड़ जी की वो दिखाएंगे। धन्यवाद। ये जो पुस्तक है ये बिल्कुल नए तरह के प्रॉब्लम के बारे में है। जो पहले हमने ब्रेकिंग इंडिया के बारे में लिखा था वो पुरानी बात है, वो भी चल रहा है, पर अब इस जमाने में बिल्कुल नए तरह के थ्रेट आ गए हैं, नए तरह के सांप, नई तरह की जहर आ गई है और नई तरह के सांप के घोंसले हैं जहां से ये सांप पैदा होते हैं। तो इस पुस्तक में इनका जिक्र किया गया है और ये जो बातें हो रही हैं इंडिया में अभी पिछले 2-3 साल की हो रही हैं और अब और भी बढ़ेंगी, आगे भी और ये बातें बढ़ेंगी। इनका क्या कारण है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे क्या नुकसान हो सकता है और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये इस पुस्तक में लिखा है। आइए विदाउट मच अडू, ज़्यादा देर किए बिना हम पहले इस पुस्तक में जो लिखा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे यहाँ क्या हो रहा है उस पर हम एक एक करके कुछ क्लिप्स दिखाएंगे और क्लिप्स के बाद फिर हम ओपिनियन लेंगे दोनों लेखकों का। So first clip. Already explained how our book Snakes in the Ganga exposes the problems with American liberal arts being imported into India. Now we want to show that this importing has taken over even the Supreme Court of India. Harvard, as you know by now, is what we characterize as the nest of the snakes. We have also said that it is Harvard that is producing this and exporting it, and this justice happens to be a Harvard product. We will show you in his own words that he is parroting exactly the things we've said coming out of Harvard. Feminist scholar Kimberly Crenshaw introduced the concept of intersectionality. Chapter 1 of our book explains the theory of intersectionality and Crenshaw's work that Chandrachud mentions. Another favorite guiding principle of this justice is critical race theory. In the context of race, the answer to this question can be founded within the text of the critical race theory. We critique why critical race theory has no place in the Indian context throughout the book. Let's watch another clip on the justices' reading list. Suraj Yengde, a prolific writer, has written in his book Caste Matters, and I'll quote him. Suraj Yengde is Harvard's Dalit poster boy. While we oppose all forms of discrimination and even agree with some of Yengede's assessment on the ground realities of the Dalits, we reject his vicious attacks on Brahmins, Hinduism, and everything related to the Indian civilization. Yengede's work is discussed at length in Chapter 5. Let's now take a look at another voice guiding the justice. In a seminal book which is titled The Caste of Merit, Engineering Education in India by Ajanta Subramaniam. Chapter 4 of our book is dedicated to critiquing the caste of merit by Ajanta Subramaniam. We recommend that the Harvard-trained justice read our book Snakes in the Ganga, which gives a rejoinder to the scholarship of the authors he admires, so he can be well informed as he makes his judgments that affect the millions of innocent, hard-working people of the nation. जी राजीव जी, ये क्या है, ये बताएंगे आप हमारे दर्शकों को ये इंटरसेक्शनैलिटी और ये आपके सूरज येंगड़े
और अच्छा, क्रिटिकल बात ये कास्ट, है क्रिटिकल रेस थियरी इत्यादि। बात ये है कि मैं 3 पुस्तकें लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। एक पुस्तक ये है, ये आई वांट पीपल टू सी, दिखाई दे रही है? जी जी। अब ये कास्ट। पुस्तक जो है ये बेस्ट सेलर बन गई, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई। इसके जो लेखक हैं एक पुलिट्जर प्राइज विनर हैं अमेरिका में। तो उनकी ये थ्योरी है कि जो कास्ट है वो अमेरिका जैसी रेसिज्म है। जो अमेरिका में रेसिज्म है, जो व्हाइट्स लोगों ने ब्लैक्स के ऊपर किया, स्लेव बनाया, जो कुछ किया, तो वैसे ही इंडिया में अपर कास्ट लोगों ने ये लोअर कास्ट लोगों को स्लेव बना रखा है। और जो दलित हैं वो इंडिया के काले लोग हैं, और जो ब्राह्मण है वो इंडिया के सफेद लोग हैं। मतलब व्हाइट्स और ब्लैक्स का जो हुआ वो ये कास्ट में है। तो ये वो डॉक्टर उनका ये भी अम्बेडकर ने रिजेक्ट कर दी थी थियरी। जी जी, डॉक्टर अम्बेडकर ने। अब ये प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिका में माइनॉरिटीज हैं वो ब्लैक्स हैं, और उनको इंडिया की जो माइनॉरिटीज है उनके साथ जोड़ नहीं सकते। क्योंकि देखिए, ब्लैक्स जो हैं वो विदेश से आके उनको हमला करके उनके ऊपर राज नहीं किया। इंडिया की माइनॉरिटीज हैं वो विदेश से आई और उन्होंने इंडिया को हमला किया, इंडिया को कब्जा किया, और इंडिया के ऊपर उन्होंने राज किया। पहले मुस्लिम लोगों ने राज किया, फिर क्रिश्चियन लोगों ने राज किया। तो इसलिए वो जो ब्लैक्स हैं, जो अफ्रीका से आए हैं, वो उन्होंने आके हमला नहीं किया, उन्होंने आके अमेरिका के व्हाइट लोगों के ऊपर राज नहीं किया। तो इसका मतलब जो उनका इतिहास है और जो इंडिया का इतिहास है वो सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो अमेरिका में हुआ वही अब इंडिया में हम वही बात हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल झूठ है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि जो दलित लोग हैं और वो जो अफ्रीका के ब्लैक्स लोग हैं वो अलग हैं, क्योंकि अफ्रीका के ब्लैक्स लोग विदेशी थे, कहीं और से आए थे, उनको अफ्रीका से लेके आए, जबरदस्ती लाए थे। दलितों को कोई जबरदस्ती बाहर से नहीं लेके आया, वो तो हमारे भाई हैं। दलित लोग हमारे ही भाई हैं, वो भारतीय लोग ही हैं। इसका मतलब जो अमेरिका में रेसिज्म हुई और जो भी इंडिया में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम जरूर, लेकिन वो अलग प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये बात हुई। दूसरी सूरज येंगड़े की स्कॉलरशिप और अजंता सुब्रमण्यम की हाँ, ये भी मैं बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि ये जो पुस्तक है मैं दिखाना चाहता हूं, देख रहे हैं आप? जी जी जी, ये है सूरज येंगड़े की पुस्तक। अब सूरज येंगड़े ने, वो दलित हैं, उनको हार्वर्ड ने पाला है, क्योंकि उनको हार्वर्ड को उनका बड़ा फायदा है। वो हार्वर्ड में आके उन्होंने जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ बातचीत करके, भाईचारा करके, उन्होंने कहा है उनको कि हम इकट्ठे मिलके इंडिया के ऊपर हमला करेंगे। इंडिया के ऊपर हम ऐसा चार्ज लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे कि इंडिया को हम सारी दुनिया में बदनाम करेंगे कि जैसे ब्लैक्स को अमेरिका में स्लेव बनाया था, गुलाम बनाया था, उसी तरह से हमको भी गुलाम बना के रखा हुआ है। और उन्होंने खूब सारे ऊट पटांग झूठ लिखे हैं इंडिया के बारे में, ये सूरज येंगड़े ने। और ये हार्वर्ड किसी और दूसरी ओपिनियन को अलाउ नहीं करता, बाकी लोगों को अलाउ नहीं करता। हम जाके उनसे ये समझो डिबेट करना चाहें या बातचीत करना चाहें, बहस करना चाहें, तो वो हमको अलाउ नहीं करेंगे। जो सूरज येंगड़े कह रही है वही उनको जैसे देवता होता है उसको मानकर वही बात चला रही है। एक तो ये भी है। तीसरी बात ये है, जो ये जस्टिस चंद्रचूड ने कोट किया, इस पुस्तक को कोट किया, ये वाली पुस्तक है, देख रहे हैं आप? हाँ, ये कास्ट ऑफ मेरिट है बाय अजंता सुब्रमण्यम। अच्छा, अब 2 दिन हुए मैंने IIT मद्रास में जाके उन लोगों को इंटरव्यू किया इस पुस्तक के बारे में, क्योंकि ये पुस्तक IIT के बारे में है। और पुस्तक कह रही है कि IITs में खूब सारे ब्राह्मण लोगों को फायदा मिल रहा है और दलित लोगों को अलाउ नहीं कर रहे। दलित लोगों को उनको अप्रेस, मतलब दबा के रखा हुआ है ब्राह्मण लोगों ने, ऐसी बात कह रही है कि IIT जो है, IIT गुलामी बढ़ा रहे हैं देश में गुलामी बढ़ा रहे हैं। और जो भी IIT में पढ़ता है वो ब्राह्मण लोगों के लिए है, ब्राह्मण को प्रेफरेंस मिलती है, ब्राह्मण लोगों को ज्यादा नंबर मिले जाते हैं, और जो दलित है उनको दबा के रखा जाता है, उनको फेल किया जाता है, ऐसी बातें हैं। और ये जो IIT वाले लोग हैं वो इसमें ये बात नहीं मानते, यकीन नहीं है उनको, स्टूडेंट्स को भी नहीं, फैकल्टी को भी नहीं। और उनको ये जो हार्वर्ड वाले लोगों ने ये पुस्तक लिखी, उन्होंने ये जो ऑपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। कोई IIT वाले के स्पोक्समैन को ऐसी बात, उनके बारे में उनकी बात मानी नहीं,
उनको चांस भी नहीं दिया कि वो बोल सके। उन्होंने सिर्फ एक तरफ की बात सुनी, कुछ लोगों की यहाँ वहां से लोगों को पकड़ के उनकी बात सुनी और एक पुस्तक लिख दी। और ये पुस्तक का बहुत अमेरिका चली। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पुस्तक छापी है और ये पुस्तक बहुत टॉप बेस्ट सेलर बन गई है। और ये जो अजंता सुब्रमण्यम बहुत बड़ी हीरो बन गई है। सारी ये सिलिकॉन वैली में और तरह तरह की जगह जाके खूब उन्होंने लेक्चर दिए, लोगों को बोला कि ये देखो जितने भी इंडिया में से टेक वर्कर्स आते हैं, आईटी वर्कर्स आते हैं, वो सब दलितों को गुलाम बनाकर दबाकर आए हैं और इनको यहाँ आने का हक नहीं होना चाहिए। ये जो H1B वीजा मिलता है उसमें भी दलितों को ज्यादा चांस मिलना चाहिए, ये ब्राह्मण लोगों को कम मिलना चाहिए। ऐसे उसने कई बातें निकाली हैं। तो ये हमको अफसोस है कि ये जो इस तरह के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, इनको ही जस्टिस चंद्रचूड मानते हैं और जो बाकी लोगों का कहना है उनकी बात उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया, कभी चांस भी नहीं दिया। अब हमारी जो पुस्तक निकली है स्नेक्स इन द गंगा, उसमें हमने ये जो अलग अलग तरह की पुस्तकें हैं, अमेरिका से आई हैं, हार्वर्ड से आई हैं, हर एक का हमने अलग अलग चैप्टर में जवाब दिया है। हर एक का हमने अलग अलग चैप्टर में एनालाइज किया है कि ये पुस्तक क्या कह रही है और इसमें क्या क्या गलतियां हैं। लेकिन जो हम कह रहे हैं और हमारे से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, उनकी बात जस्टिस चंद्रचूड ने कभी नहीं कोट की। शायद उन्होंने हमारी बात पढ़ी भी ना हो, लेकिन जो हमारे भारत के अगेंस्ट है, भारत के विरोध में है, उनकी बातें ही ये जस्टिस सुना रहे हैं। ये इस पर हमको अफसोस है। जी चलिए अगली क्लिप देखते हैं। Next clip. Already explained how our book Snakes in the Ganga exposes the problems with American liberal arts being imported into India. Now we want to show that this importing has taken over even the Supreme Court of India. Harvard, as you know by now, is what we characterize as the nest of the snakes. We have also said that it is Harvard that is producing this and exporting it, and this justice happens to be a Harvard product. We will show you in his own words that we give a rejoinder to Marxist theories such as critical race theory and intersectionality. The idea is to make newer and newer marginalized groups who will continue the activism with vigor and enthusiasm akin to what we see in the fresh converts to any new religion. Wearing the oppressor-oppressed lens, one can go on defining any number of intersectional groups by mixing and matching identities, leading to a proliferation of identities considered to be marginal that need special treatment. The more the victimhood, the more special one gets treated. Thus, new made-up identities in gender and sexuality crop up every day, resulting in people demanding special treatment as they consider themselves victims of systemic oppression, which is always blamed on patriarchy. Justice Sanjay Chandrachud, who is well-schooled in Marxist thought, considers intersectionality a useful tool. Intersectionality has thus become an important conceptual tool for all of us today, where numerous individuals are marginalized to different degrees due to their varying group identities. Therefore, any solution to this issue has to be one which does not force these individuals to choose between these multiple identities. This shift has opened the floodgates of identity politics because more victim identities emerge. Academic fields now include critical grievance studies, critical gender studies, critical sexual studies, critical fact studies, and critical caste studies. Chandrachud's commitment to intersectionality is so deep that he wants newer and newer rights to keep up with newer and newer groups of oppressed. It is important for our rights to constantly keep evolving to address new forms of marginalization that these groups have to face. It seems that the end game for creating more and more oppressed identity groups is to systematically hand over resources and power to those who wish to dismantle society as it stands today, which means the destruction of family, culture, and institutions in a given society. जी राजीव जी, इंटरसेक्शनैलिटी एज द टूल। ये कह रहे हैं कि हर एक
भारत में बहुत तरह के विक्टिम्स हैं। विक्टिम्स मतलब जो भी, जिनको भी गिला है, जो भी लोग कह रहे हैं कि जो भारत है वो हमारे अगेंस्ट है, हमको ऑप्रेस करके, गुलाम करके, दबा कर रखाया हुआ है, उनको विक्टिम्स कहते हैं। तो इस तरह 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 के विक्टिम्स हैं, और ये जस्टिस कह रहे हैं कि ऐसे और भी विक्टिम निकालने चाहिए। ये बात मतलब ये नहीं कि 2-4 विक्टिम ही हैं, दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, और भी तरह के हैं, जो LGBTQ हैं, गेज हैं, इस तरह के कोई लिमिट ही नहीं। जितने भी लोग हैं जिनको कोई कंप्लेंट है इंडिया के अगेंस्ट, वो भी विक्टिम ही कहलाने चाहिए, और इनको खास प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। अब इसका नतीजा ये होगा कि जो भी ग्रुप है जो कहे भी हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ फैसिलिटी चाहिए, तो वो शुरू करेगी कि हम तो विक्टिम हैं। एक बार कह दिया कि मैं विक्टिम हूं, हम सब लोग विक्टिम हैं, किसी भी कारण विक्टिम हैं, तो इसका मतलब आपको फिर अब रेवोल्यूशन करेंगे, आप वायलेंस करेंगे, आप रिवोल्ट कर देंगे, और आपको गवर्नमेंट फिर फैसिलिटी देगी। ये प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह के विचार की। और ये विचार जो है ये मार्क्सिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट विचार है, ये इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में। ये भारतीय विचार नहीं है। ऐसा कोई हमारी संस्कृति में, हमारे किसी शास्त्र में कोई ऐसी बात कभी कही नहीं गई, और ये नई बात फॉरेन कंट्री से आ रही है, हार्वर्ड से आ रही है, और इसका काफी नुकसान हो सकता है। जी, आइए अगली क्लिप देखते हैं। At stake here is the difference between equity and equality. Equality means equal opportunities to all. Equity, on the other hand, means achieving equal outcomes by reallocating the level of resources required to achieve this. Here, the Supreme Court Justice is making a case for substantive equality, which essentially means equality of outcome. Formal equality requires recognizing all persons as equals, and substantive equality aims at equitable outcomes. Justice Chandrachud blames it on institutional racism, or in India's case, institutional casteism that is woven into the very fabric of institutions like the IITs. He says structural bias embedded in the Indian institutions like the IITs is the cause for different outcome, making no mention of the hard work, inherent skills and other factors that clearly have a bearing on outcome. The members of the marginalized communities can also be institutionally humiliated, not merely by using the tool of law, but also by establishments that further a conducive environment for discrimination and humiliation to be perpetuated. The bottom line, the new principle is based on identity politics. Each group identity based on race, sex, sexuality, gender identity, nationality and creed experiences life differently, and their inequality of power needs to be compensated by giving them unequal rights. Treating every person as an individual, irrespective of their differences, and members of multiple groups would not be sufficient to gain personhood, because it would be ignoring the lived realities for those for whom their membership in such groups is a crucial part of their identity. The Indian Supreme Court Justice is dismayed at IIT's unequal outcomes despite caste and gender reservations. Even as the base of the student body at the undergraduate level has become more diverse, though diverse not enough, questions have been raised time and again regarding the limited representation of gender diverse and marginalized communities. He hopes to use critical race theory to solve such disparities in outcome. राजीव जी, सुनने में तो अगर किसी को अधिक जानकारी ना हो तो उसे सब तर्क बड़े आकर्षक लगेंगे ऊपर से, सुपरफिशियली। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? तो ये कह रहे हैं कि जो लोग लायक हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जिनके नंबर आगे आते हैं, वो उनको नहीं आने चाहिए, और जो पीछे रह जाते हैं, जिनके नंबर कम होते हैं, उनको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए। मतलब वो जो मेरिट है, मेरिट मतलब जो ज़्यादा क्रिकेट में ज़्यादा रन लेता है वो अच्छा बैट्समैन है, जो कम रन लेता है वो कम बैट्समैन है, इसको मेरिट बोलते हैं। जो बॉलर है, जो ज्यादा विकेट्स लेता है, उसको अच्छा बॉलर मानते हैं। ऐसे है ना, जो रेस होती है, जो जल्दी भागता है वो ज्यादा, उसमें मेरिट ज्यादा है, उसमें ताकत ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो उसको ज्यादा मेडल मिलेंगे। ऐसे होता है ना, हर चीज में, हर कंपटीशन में ऐसे ही होता है। तो पर उनका कहना है कि ये जो IITs हैं और ऐसी जगहें हैं, उनमें ये बिल्कुल
ये ठीक बात नहीं है कि कई लोग आगे बढ़ रहे हैं, कई लोग पीछे रह गए हैं, और जो पीछे रह गए हैं वो माइनॉरिटी लोग हैं, वो दलित लोग हैं, वो LGBTQ लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। तो उनको जबरदस्ती आगे ले जाना चाहिए, चाहे उनके नंबर ठीक हो ना हो, उनको आगे डालना चाहिए, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा जुल्म है एक तरह का, कि ये कई लोगों को आगे जाने देते हैं और बाकियों को पीछा रखते हैं। अब ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी बात चले तो भारत फिर विदेश में कंपटीशन नहीं कर पाएगा। चाइना आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे जो लायक लोग हैं, जो जिनको जानकारी है, वो आगे नहीं जा सकेंगे। समझो आप क्रिकेट टीम में ऐसे कोटा लगा दें कि क्रिकेट टीम में LGBTQ का भी होना चाहिए एक आदमी, और ये माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी, दलित भी होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और जो जिसके ज्यादा आगे रन है उसके बेसिस पर नहीं क्रिकेट टीम बनेगी, तो ऐसी क्रिकेट टीम जीतेगी नहीं, ऐसी क्रिकेट टीम तो हार जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हमको लगता है कि ये जो इनका जो विचार है उसमें ऐसा ही प्रॉब्लम है कि भारत सारी दुनिया में पीछे रह जाएगा। जी, And अगली क्लिप can I just add one more point to that, Sanjay ji? So outcome, को समम करने के लिए what they want to do is standards को you want to निकालना चाहिए. So that dilute is the standards. Yeah, so dilute the standards or not have standards at all. In fact, in Western universities now, they have test optional. So you can either do testing and give the marks or don't have to submit testing. So, and that's a problem, so that's how you get equal outcome. So how do you get equal outcome? By changing the criteria itself. The cricket game ko hi badalna chahiye. So that outcome, yeah. वो कह रही है ऐसे, इनका कहना, विजय जी का कहना ऐसे है कि वो उनका मतलब है कि जो क्रिकेट में रन नहीं लगाता, एक तो सेंचुरी लगाता है, दूसरा 0 पे आउट हो जाता है, तो जो 0 पर आउट हो जाता है उसको धीरे बॉल फेंकनी चाहिए, उसको जोर से बॉल नहीं फेंकनी चाहिए। जो बहुत अच्छा बैट्समैन है उसको तो जोर से बॉल फेंकेंगे, हाँ, उसको आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि उसके रन कम हो जाएं, और जो बिल्कुल नालायक बैट्समैन है, जो बिल्कुल काबिल नहीं है, उसको हम बहुत धीरे धीरे बॉल फेंकेंगे ताकि वो थोड़े रन बना ले। ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब ये जब ऐसा सिस्टम होगा तो नालायकी बढ़ेगी, और जो लायक लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, वो कम होंगे, और जो लोग मेहनत नहीं करते, वो बेफजूल लोग हैं, वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा जो समाज होगा वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा। जी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी बेसिकली। नेक्स्ट क्लिप ले लेते हैं। Is a work that systematically critiques critical race theory and wokeism as it is applied in the Indian context. But it seems like the Supreme Court is turning woke, with Justice Chandrachud using critical race theory to inform his judgments. Proponents of this theory, the critical race theory, do not wish to eliminate race because they acknowledge that it is and will always be a part of their lives. Chandrachud believes that merely treating everybody the same, regardless of caste, is not enough. He then goes on to equate race with caste, thus applying critical race theory on Indian society. He says castelessness is a privilege for the upper castes, who have quickly transferred their caste privilege into other forms of capital like merit. Once it is acknowledged that race and racial discrimination exists, it makes it possible for the years of damage to be counteracted by positively uplifting the discriminated races. A similar analysis also holds true for India with respect to caste, where castelessness is a privilege that only the upper caste can afford because their caste privilege has already translated into social, political, and economic capital. And so begins Justice Chandrachud's attack on merit and hard work of the millions in India who sacrifice all they have for a chance at success. दर्शकों, आप कृपया जो भी देख रहे हैं उसको एक बार तो वीडियो को तुरंत लाइक कर लें, और साथ में इसको याद रखें, इसको आपको शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ये जो इन्होंने थ्योरी प्रोपाउंड की, इसके बारे में क्या कहेंगे राजीव जी? हाँ, ये एक थ्योरी है कि जो लोग जिन लोगों को कास्ट का फायदा हो रहा है,
वो कहते हैं कि सोसाइटी कास्टलेस बन जाए, क्योंकि कास्टलेस बनेगी तो जो उनको फायदा है वो छिपा हुआ है। उनको तो कैपिटल मिल गया, वो तो कैपिटल हड़प कर रहे हैं, वो तो आगे निकल चुके हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि कास्ट के द्वारा वो लोग रेस में आगे हैं। अब कह रहे हैं आगे क्योंकि वो आगे हैं, बाकी लोग पीछे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं अच्छा आप कास्ट वास्ट बंद कर दो क्योंकि हम तो जीत रहे हैं हम, हाँ इसलिए। लेकिन उनका कहना है कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो कास्ट से दबे हुए हैं, उनके लिए कास्ट जरूरी है, क्योंकि वो कास्ट के द्वारा ही अब लड़ेंगे, क्योंकि वो कास्ट के द्वारा ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लगाकर आगे जाएंगे। तो इसका मतलब हमको कास्ट चाहिए, ताकि कास्ट के साथ ही हम अपने राइट लगाएं, अपना हक लगाएं। कास्ट के द्वारा ही हम अपना राइट लगाएं कि हम जो लो कास्ट वाले लोग हैं हमारा राइट है। कास्ट को हटा देंगे तो फिर जो हम लो कास्ट वाले हैं वो वहीं रह जाएंगे। तो कास्ट के साथ ही अब हमको लड़ना है। तो ये बिल्कुल अलग बात है। जो इंडिया में कह रहे हैं कि हमको कास्ट वास का बायस चाहिए नहीं, तो वो कह रहे हैं कास्ट का बायस चाहिए, और ऐसी तरह से चाहिए कि जो लो कास्ट है उनका फायदा हो। मतलब वो कास्टिज्म चाहते हैं, लेकिन कास्टिज्म जो लो कास्ट वाले हैं उनके फेवर में कास्टिज्म होनी चाहिए, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन चाहते हैं। And I can add one more thing here, क्योंकि the upper caste लोगों ने अपने कास्ट को like रुपीस से डॉलर को कन्वर्ट कर, like that, अपने कास्ट को कास्ट कैपिटल को मेरिट के रूप में बदल दिया. Just like how you would do rupees to dollars, you convert and take currency, like that, अपने कास्ट कैपिटल को कन्वर्ट करके मेरिट के फॉर्म में करके वो आगे जा रहे हैं. एंड अमेरिका भी वो करेंसी को लेके अमेरिका जा रहे हैं, एंड दे आर बीइंग सक्सेसफुल. सो दैट्स द आइडिया हियर. मतलब उनका कहना है कि जो मेरिट जिसको कहते हैं वो एक कास्ट का रूप है, उसमें कास्ट छिपा हुआ है। कास्ट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें कास्ट छिपा हुआ है। तो वो उन लोगों का तो कहना है कि अब कास्ट वास को बंद करो। जो अपर कास्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कास्ट वास को बंद करो, कास्ट में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास मेरिट हो गया है, कास्ट के द्वारा हमने मेरिट ले लिया, और क्योंकि हमारे पास मेरिट में हम आगे बढ़ गए हैं तो हमको अब कास्ट की जरूरत नहीं है। तो ये वो कह रहे हैं ये बदमाशी है, ये जो अपर कास्ट लोग कास्ट को हटाना चाहते हैं बिल्कुल गलत है। हमको लोअर कास्ट वाले लोगों को कास्ट चाहिए ताकि हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मांग सके जो लो कास्ट वाले हैं उनके फायदे के लिए। I really wonder what Dr. Ambedkar would have thought of this theory, because he always thought that people could achieve merit, and he himself was an example of that. Anyway, next clip देखते हैं. अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जस्टिस चंद्रचूड आप ही मेरिट के साथ ही तो आगे निकले हैं। आई मीन उनका दिमाग है, वो हार्वर्ड गए, उन्होंने मेहनत की। हम इसका बहुत उनको एडमायर करते हैं कि उन्होंने मेहनत करके मेरिट से ही वो आगे बढ़े। तो इसका मतलब वो अब लेकिन मेरिट के द्वारा तो खुद ही आप आगे बढ़े, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है। अपने लिए तो ठीक ही है ना, बाकियों के लिए ये तो है, बट मेरे को एक चीज और भी लगती है कि विद सच मेरिट व्हाई डज ही हैव टू रीड फ्रॉम अ रिटन स्क्रिप्ट? वो रिटन स्क्रिप्ट से क्यों पढ़ते हैं? और तो बड़ा डाउट लगता है, कहीं सूरज येंगड़े से तो नहीं लिखती है उनकी स्पीच, ऐसा लग रहा है। आइए नेक्स्ट अगली क्लिप देखते हैं. Attack on IITs claiming meritocracy to be a sham born out of Brahminical privilege. The war against meritocracy is even broader. Here is the NCERT outside expert on merit in an interview by Ashoka University. Because merit is deeply Brahminical. It's a Brahminical concept, and so when you oppose reservations or grounds of merit, you are upholding a certain caste structure. We could dismiss this statement as something irrelevant, but India's top Supreme Court Justice Chandrachud is applying critical race theory, saying that the equal opportunity system and even the reservation quota for minorities is rigged because the privileged have converted caste capital into merit, which then produces unequal outcome. The justice says he wants to give new meaning to objective truths like science, excellence, and even examinations. When we think of the expression science, we tend to think about words like objectivity,
merit, excellence, maybe even competitive examinations. What I want to do is unpack new meanings of old vocabularies. Excellence is normally understood in individual terms as a sign of individual merit, individual caliber, individual hard work. But by focusing on the individual, we often mark the historically acquired privilege that each of us shares. The privileges that accrue to so-called general categories are not limited to English medium schooling, access to coaching centers, but it also includes cultural and social capital that is inherited from their families. The goal of the justice is to carry on Ajanta Subramaniam's agenda of dismantling the IITs and the IIMs as they stand, because they are institutions that have excelled on the basis of merit. The concept of meritocracy in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education is thus being declared abusive. Snakes in the Ganga shows the disastrous consequences of these invasive ideologies given India's delicate equilibrium of diverse identities. राजीव जी। सो उनका ये कहना है कि ये इंडिविजुअल बैट्समैन की बात नहीं है, ये नहीं आप कह रहे ये संजय दीक्षित आगे ज्यादा रन लेता है और ये राजीव मल्होत्रा कम रन लेता है तो इंडिविजुअल एक संजय में खूबी है, ये नहीं है। संजय दीक्षित की जो जाति है, वो जो उनकी कम्युनिटी है, उस सारी कम्युनिटी को ही एक बैटिंग का फायदा मिला है। बैटिंग ऐसी चीज है जो संजय दीक्षित की कम्युनिटी को फायदा देती है और राजीव का जो जाति है उसको पीछे रखती है। बैटिंग है ही ऐसी चीज। तो उन्होंने कहा है कि ये जो जिसको साइंस में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, एक्सीलेंस कहते हैं, मेरिट कहते हैं, ये चीजें जो अपर कास्ट लोग हैं उनको उनके फायदे के लिए ही हैं। इंडिविजुअल मेरिट, इंडिविजुअल की बात नहीं चलती। ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है, ग्रुप आइडेंटिटी जो है, उसको कई आइडेंटिटीज को फायदा मिलता है, कई आइडेंटिटीज को नुकसान मिलता है। ये इसको गलती से ये लोग मेरिट कहला रहे हैं, ये उनका कहना है। And Sanjay ji, before that, in the West, right, you have the punctuality, samay pe aana is considered a white thing, just like merit. So it's again a group thing and it's a white thing, and therefore it should be shunned. And that's how the critical race theory pans out in the West. So you get an idea. Anything so good in mathematics is objective. 2 + 2 is 4. You say, and that is again patriarchal because it's a white thing or it's a Brahminical thing. 2 + 2 need not be equal to 4. It can be 5 also. That's what they say when it's a subjective experience. Okay. Is waiting in the wings, slated to be the future Chief Justice of India, speaks about privilege and attacks merit as caste capital that needs dismantling because it produces unequal outcomes. It's an irony because Exhibit A of privilege are the Chandrachuds themselves. The Harvard-educated Dhananjay Chandrachud is the scion of India's longest-serving Chief Justice, Yashwant Chandrachud, and also the father of the Harvard and Stanford-educated Abhinav Chandrachud, who is a practicing advocate in the high courts. You get the picture. Would it be too much to ask the Honorable Justice to walk the talk by relinquishing the power and positions he has accrued through these forms of inherited caste capital, before he harshly judges the rest of us or redefines merit for the rest of us? Actually, that's a very important point that he should relinquish the Chief Justiceship. And not only that, मैंने इनका और थोड़ा देखा है कि इनके जो पूर्वज थे वो पेशवा के सिपहसालार थे और पेशवा माधवराव के टाइम पे पेशवा माधवराव और रघोबा उनके बीच में हुआ था, तो वो रघोबा के साथ चले गए थे, तो फिर ही हैड टू सफर। तो ये तो इनकी जो कैपिटल है, कास्ट कैपिटल, वो तो सदियों से चली आ रही। तो आई थिंक ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू से राजीव जी? देखिए, दिस आई कांट कमेंट ऑन।
बिकॉज मेरे को इंडियन लॉ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, नॉर डू आई नो पर्सनल हिस्ट्री। मेरी स्पेशलिटी तो ये है कि हार्वर्ड में जो झूठ बोला जा रहा है, जो गलत स्कॉलरशिप है, उसको कोट किया जा रहा है। तो मेरे को तो हार्वर्ड से ही गिला है, और जो भी हार्वर्ड के गलत स्कॉलरशिप को कोट करके उस पर चलता है, मेरे को उनके ऊपर ही ये प्रॉब्लम है कि आपको हार्वर्ड की बात माननी है तो दूसरे जो ऑपोजिट लोग हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए। आप हार्वर्ड को कोट करोगे तो जिन लोगों ने ये जनता सुब्रमण्यम की गलतियां दिखाई हैं, सूरज जंगडे की गलतियां दिखाई हैं, बहुत मेहनत करके रिसर्च करके कितनी गलतियां निकाली हैं, लिखा है, पब्लिश किया है, उनकी बात भी कोट करनी चाहिए। यदि वो दोनों साइड की बात कोट करें और फिर कोई फैसला करें तो फिर तो हम मानेंगे, क्योंकि कोर्ट में तो ऐसे होना चाहिए ना, दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। एक ही तरफ की बात सुनो और फिर फैसला कर दो, ये तो ठीक बात नहीं है ना, ये तो फेयर जस्टिस नहीं है। ये तो ये हमको तो इसी पर ही गिला है कि उन्होंने एक तो जिन लोगों को कोर्ट किया वो लोग काबिल नहीं है, वो अच्छे स्कॉलर नहीं है उनमें, और दूसरी बात यह है कि उनकी जो गलतियां हैं वो काफी लोगों ने बताई हैं, हमने बताई हैं, लेकिन हमको इन्होंने कोट नहीं किया कभी। और जो बाकी लोग हैं, जो हार्वर्ड वाले लोग हैं, उन्हीं को वन साइड एक तरफ को कोट किया, दूसरी तरफ को कोट नहीं किया। ये हमारा प्रॉब्लम है। Also, Sanjay ji, we don't know the motives of the justice, but we do know the motives and the end goal of Marxist ideology. So what we are criticizing are these schools of thought which come under Marxism. So that's our goal. It's not a personal attack of anything. We're purely looking at what is the scholarship saying, what is critical race theory saying, and uska, what would be the outcome of applying critical race theory or intersectionality. That is our our criticism. हम बिल्कुल जैसे ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड माइट बी अ वेरी वंडरफुल पर्सन, अच्छे लोग हैं, मतलब हमको क्या मालूम, हमको पर्सनैलिटी को नहीं जानते, और पर्सनैलिटी के ऊपर हम कुछ ब्लेम नहीं कर रहे, कोई हम डेफेमेशन नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो उनकी जजमेंट है, जो वो कोटेशन दे रहे हैं, जो उनके विचार हैं, उस विचार में दोनों साइड का बैलेंस करके नहीं उन्होंने विचार बनाए। उन्होंने एक तरफ के लोगों के विचारों पर उन्होंने जोड़ दिया अपने विचार, और जो उनके दूसरी तरफ के लोग हैं उनकी बात उन्होंने मानी, उनकी बात उन्होंने शायद पढ़ी भी ना हो। ये जस्टिस की बात नहीं है, ये तो वन साइडेड है। दोनों साइड को बराबर इनको कंसिडर करना चाहिए और फिर फैसला देना चाहिए। जी, is there one more clip? Chandrachud redefining the concept of merit when asked if we will trade off excellence in order to produce equal outcomes. My simple answer is, how do you balance upliftment and merit? Very simple. You just need to redefine merit. How do you define merit only in terms of test scores in the examination? How do you only define merit in terms of entrance tests? We disagree with Justice Chandrachud's presumption that Dalits and other minority groups are unable to succeed on meritocracy. Not to talk of how patronizing and insulting it is to think that they cannot succeed on a competitive playing field like the rest of us. We, on the other hand, believe that the Dalits and minorities of India are as good as anyone else who can succeed based on meritocracy if we provide the necessary access and support along the way. This is the kind of Dalit empowerment that India needs, I'm sure you'll agree. Moreover, China is ratcheting up its stance on meritocracy, wooing Chinese scholars abroad back to the homeland through its 1,000 Talents plan. The objective field of mathematics is being relativized, post-modernized if you will, establishing nonsensical statements like 2 plus 2 does not and need not be equal to 4, which is the objective truth. It's neither Brahmin nor Dalit, but simply the objective truth. The United States is losing its dominant position of being in the cutting edge of science and technology thanks to wokeism. Chandrachud's attack on meritocracy will ruin India's position on a cutthroat global stage and in the open markets. Instead of glorifying work ethic,
He wants us to glorify victimhood. Instead of envisioning a stronger India, he is trashing the whole concept of meritocracy and making a mockery out of it. We believe that rejecting meritocracy indeed leads to the failure of India. Ours is not a theoretical argument but a pragmatic one against it. If you do not champion the qualities of success that meritocracy encompasses, then failure is inevitable. So that brings us to the end of the clips. अब इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम प्रश्न ले सकते हैं. कई सारे प्रश्न भी आ गए हैं ऑडियंस के. तो राजीव जी, ये जो आपने बात कही कि कम से कम दोनों तरफ की बात तो सुननी ही चाहिए. वैसे जुडिशरी में, क्योंकि नाउ आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड लॉयर एंड एडवोकेट, तो इसमें ये होता है कि जजेस जो हैं अगर किसी पॉइंट पे बहुत स्ट्रांग व्यूज होल्ड करते हैं तो वो उस तरह का केस सुनते नहीं. दे रिक्यूज देमसेल्व्स बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एन ओपिनियन. तो अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे तो कम से कम हम इनसे ये तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके इतने स्ट्रांग बायसेस हैं, इतने स्ट्रांग आपके थॉट्स हैं, आप पूरी की पूरी सोसाइटी डिसमेंटल करना चाहते हैं. अभी अभी आपने एक बड़ा अजीब सा जजमेंट दे दिया जिसने कि हैज़ द कैपेसिटी टू ओपन द फ्लड गेट्स फॉर व्हाट इज़ कॉल्ड मैरिटल रेप. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हार्वर्ड स्कूल से पढ़ के आए, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो लीगल सिस्टम है वो सारा का सारा इंग्लिश कॉमन लॉ पे आधारित है. ये भारत है, इसमें भारतीयता का क्या कोई भी स्थान नहीं है? देखिए, ये हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड ने सारे इलीट लोगों को पढ़ाया है. इसमें ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, ये जो जुडिशरी वाले लोग हैं. तो मतलब ये जो इंडिया की टॉप टियर इलीट लोग हैं वो वहाँ या तो वहाँ से पढ़े हुए हैं या जो लोग पढ़ के आए हैं उनके स्टूडेंट हैं. मतलब हार्वर्ड एक विश्वगुरु बन रहा है, हार्वर्ड विश्वगुरु बन रहा है. और ये हमारे जो इलीट लोग हैं, लॉयर चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, ब्यूरोक्रेट, मीडिया का हो, स्कॉलर हो, इन लोगों ने हार्वर्ड को विश्वगुरु बना रखा है. तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में ऑक्सफोर्ड था विश्वगुरु, और ऑक्सफोर्ड विश्वगुरु बना. सारी इंडिया की हिस्ट्री भी वही कंट्रोल करता था. इंडिया की सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वो कंट्रोल करता था. वो रिसर्च करके फिर लोगों को पढ़ाता था. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको ऑक्सफोर्ड पढ़ाता था, और जो इंडिया में जो इलीट हैं, बाबू हैं, जो लोग हैं, उनको भी ऑक्सफोर्ड ही पढ़ाता था. तो ये अब हार्वर्ड का काम बन गया है. और ये हम पुस्तक में लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बहुत डेंजरस चीज़ है. और हार्वर्ड की इतना इन्फ्लुएंस है कि वो जो यूनाइटेड स्टेट्स में कांग्रेस है और सेनेट है और गवर्नमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के, जो रिलीजियस फ्रीडम के बारे में लोग बोलते हैं, ये सब हार्वर्ड सिखाता है उनको. और जो थिंक टैंक्स है, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट है, कार्नेगी है, अच्छा, और जो लेखक है वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, ये जितने भी हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट वाले, ये सब लोग हार्वर्ड जो विचार करता है, जो हार्वर्ड की कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे मीडिया की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस हो, जिस भी डिपार्टमेंट में जो कॉन्फ्रेंस है, और जो वहाँ से लेखक निकलते हैं, वहाँ से थीसिस निकलती है, पेपर निकलते हैं, पुस्तकें निकलती हैं, उन्हीं पर ही सारे ये लोग चलते हैं. जो हार्वर्ड वाले ने कुछ कह दिया तो वो सच ही होगा. तो हमने जो कुछ कहा, चाहे हम भी सच हो, हमारी बात कोई नहीं मानेगा. अब इसको कैंसल कल्चर भी बोलते हैं संजय जी. कैंसल कल्चर ये होती है कि जो हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, जो जिसके विचार अलग हैं, हम उसको कैंसल कर देंगे, उसको हम बोलने ही नहीं देंगे. वो आएगा तो उसको स्टूडेंट्स उसके पीछे गालियां देंगे, उसको निकाल देंगे, और चांस तो यही है कि उसको हम परमिशन नहीं देंगे आने की. इसको कैंसल कल्चर बोलते हैं. अभी अमेरिका अपने आप को बहुत फ्री थिंकिंग समझता है, फ्री सोसाइटी कहता है.
हार्वर्ड अपने आप को कहता है कि हम तो बहुत ही फ्री सोसाइटी है, लेकिन कोई फ्री सोसाइटी नहीं है। हमारे जैसे लोगों को उन्होंने कैंसिल कर रखा है पिछले 30 साल से हमारे जैसे लोगों को कैंसिल कर चुका है। जो IIT के में लोग हैं, जो दो दिन पहले मैंने उनसे बात की, और जो अजंता सुब्रमण्यम की पुस्तक है उसके बारे में उनको पूछा कि आपका क्या कहना है, उनका तो बहुत गुस्सा है। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल ही झूठ है, गलत है जो अजंता सुब्रमण्यम ने लिखा, लेकिन उनको कैंसिल कर दिया। ऐसे लोगों को, IIT वालों को हार्वर्ड नहीं बुलाता। अब ये जो दलित के बारे में, कास्ट के बारे में, एक वैद्यनाथन है, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर में वैद्यनाथन है, जिन्होंने 15, 20, 30 साल इस कास्ट के ऊपर बहुत रिसर्च की है कि कास्ट की जो इकोनॉमी है क्या है, वैसे है। अब हार्वर्ड में ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हमेशा होते रहते हैं, लेकिन वैद्यनाथन को एक बार भी उन्होंने ही नहीं बुलाया, और उनके जितने भी लोग पेपर पढ़ते हैं उसमें वैद्यनाथन का कभी नाम आया ही नहीं, और ये आने भी नहीं देते, उनको बिल्कुल अलग रखा है। इसको कैंसल कल्चर बोलते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं विजया जी से पूछूंगा एक थोड़ा सा पर्सनल सा है क्वेश्चन कि आपने तो अपने बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाया तक नहीं, तो अब चूंकि उनको आपने फॉर्मल एजुकेशन में नहीं पढ़ाया, उनको गुरुकुल में पढ़ाया, तो जो फॉर्मल स्टाइल है जो एजुकेशन की, उसके हिसाब से तो दे बिकेम डिसएडवांटेज्ड। But in the scheme of Mr. Chandrachud, they would not be considered disadvantaged, but instead they would still be considered privileged. What do you say? No, you're saying the children would be considered privileged because they did not have formal education? No, I mean, they should normally be considered disadvantaged because they did not go through the formal system schooling. But in Mr. Chandrachud's scheme, they would still be considered privileged, isn't it? Yes, because they, as long as you're not an oppressed caste, if you're coming from an upper class, then you will have, you carry with you the caste capital. And in the end, you use that to get ahead in life. And this is a huge problem because caste capital is so it's so useful for the upper caste people that they can they and so they've already converted it to currency. So now they're saying we don't want, we will do meritocracy, every equal opportunity for everybody, and we will all play the equal rights for everybody, equal opportunities for everybody, and we'll play the game. But what they are saying is that's not correct, and we will give different, we will essentially, the people who are oppressors will have less rights, and the people who are victims will have more rights. So essentially it's a transfer of resources and everything that is earned through hard work and skill to those who do not have it. So essentially it's a kind of taking resources from one group and transferring it to the other. And that's why you see a lot of talk these days for equalizing all kinds of wealth, whether it is merit, whether it is actual physical wealth, all of that. Reparations is a big topic in this whole critical race theory, whether it's in America with Native Americans, so give reparations to people. But of course the Indians will never be given reparations from the British, or that topic never comes up. But reparations for Dalits, even Suraj Yangade talks about giving Dalits land, free land, sending 10,000 Dalits to Harvard every year. Like he wants the government to do that. So these are sort of proposals that they have. Just take it from wherever and give it, because of what justifies that is the historical oppression that they have seen. मतलब बात ये है, उनका कहना ये है कि जो अब बदला लेना है मतलब पहले आप लोगों के बाप दादों ने, पेरेंट्स ने, पहली पीढ़ियों के लोगों ने, पहले जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे को ऑप्रेस किया, हमको गुलाम बनाया। तो आपने कैपिटल बहुत इकट्ठा कर रखा है,
तो अब हमारे चांस है। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। आपने स्वयं प्रूव किया है ब्रेकिंग इंडिया में कि ये सारी बातें बकवास हैं और ये सारी की सारी चीज जो है वो अंग्रेजों ने बना के और यहाँ पर चलाई हुई है। और आपने देखा 1871 सेंसस के बाद से ये सारा नाटक हुआ है। ये तो आपने खुद ने ब्रेकिंग इंडिया में दिखाया हुआ है। जी जी। तो ये मतलब यदि आप किसी कम्युनिटी को बोलो कि आप बदला लो, आप देश से बदला लो, क्योंकि देश ने आपको ये गुलाम बना रखा है, अब देश के ऊपर बदला लो, वो तो फिर देश टूट जाएगा, वो देश टूट जाएगा। यही तो ब्रेकिंग इंडिया 2.0 हो रहा है कि अब ये हार्वर्ड ऐसी बात यहाँ पर इंडिया में ला रहा है और ऐसी चीजें लोगों को सिखा रहा है। और जो इलीट लोग हैं इंडिया में, जो टॉप टियर के इलीट लोग हैं, वो हार्वर्ड के जो पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी बातें समझ रहे हैं और उनके अंदर ये दिमाग में ऐसी बातें आ गई हैं और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। सही बात है। मुझे तो लगता है हमारे भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कह रहे थे कि भाई हम वो हार्वर्ड को हेवर्ड कहते हैं, तो लगता है कि वो वही वाला हिसाब है। आइए अब हम दर्शकों के पास चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ गए उनके, तो दर्शकों के प्रश्नों से पूछने से पूर्व एक बार फिर से सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप लोग जो भी देख रहे हैं कृपया लाइक का बटन तो तुरंत ही दबा दें, साथ में आपको शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, हमें सपोर्ट भी करना है। प्रश्न मनीष, Dandavat pranam to Rajiv sir for his sacrifices. Sir, why is it that most of the sympathizers and leaders of the woke are from the upper caste? देखिए, ये इन्होंने वोक के जो सपोर्टर्स हैं वो अपर कास्ट टारगेट किए गए हैं। ये ब्रेकिंग इंडिया 1 और ब्रेकिंग इंडिया 2 में ये डिफरेंस है कि ब्रेकिंग इंडिया 1 जो पहले था, जो हमने 10-12 साल पहले लिखा था, उस जमाने में ये गांव में जाते थे, जो लोग गरीब हैं उनको भड़काते थे और उनको कन्वर्ट करते थे। अब ये जो टॉप टियर के इलीटिस्ट लोग हैं, जो अच्छे खानदान से जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा कमाए हैं, जो 10 लाख 15 लाख रुपए देकर ये अशोका में बच्चे पढ़ाते हैं या अमेरिका जाते हैं बहुत पैसे देकर, ये जो इलीट फैमिली के लोग हैं जिनके पास पावर बहुत है, अब इनके पीछे जा रहे हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। सो इसीलिए जो वोकिज्म है, ये इलीट लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, हाई क्लास लोगों को ये वोकिज्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी टारगेट ही ऐसी है। जी, नेक्स्ट Naveen Kumar, these judges themselves are product of collegium system. They gonna hate the meritorious, talented people. We have got an anaconda in the Ganga, not just a snake. जी, गंगा में सांप हैं, बिच्छू हैं, ये और तरह के मगरमच्छ हैं, तरह तरह के जानवर हैं। और ये जो इनका जो घोंसला है वो हार्वर्ड में है और वहां से इन जहरीले कई तरह के सांप और बिच्छू मगरमच्छ पैदा करके भेजे आ रहे हैं ये लोग। और कई बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं, बहुत ऊंची जगह में हैं, कई छोटे मोटे सांप हैं, तो इस तरह के काफी लोग ये भेज रहे हैं। नेक्स्ट पूनम अब्बी, is this the first world colonizers and invading mass murderers and enslavers are trying to ensure that their below mediocre people retain their control by suppressing and persecuting, cancelling all competition from their slaves? नहीं, ये मतलब ये इसका रीजन ये है कि देखिए, जो ब्लैक्स पर हुआ वो तो जस्टिफाइड है। ब्लैक्स आर जस्टिफाइड इन फाइटिंग फॉर राइट्स एंड getting reparations and whatnot from whites. Blacks are justified. But that same logic does not apply in India. Whatever is happening between blacks and whites is an American thing. उनकी हिस्ट्री अलग है, उनकी सारी background is different. You cannot take that and put it on India. That is our problem. We are not saying that blacks should not be fighting for justice and they should not be raising their voice and trying to organize. Blacks का अपना problem है, okay? But India में you cannot bring this racism into India. India will be destroyed.
if you start saying that caste is racism, so all the international laws of racism, UN laws, all kind of laws, trade sanctions, all of those kind of things will be applied, and India will be destroyed, because India will be declared the most racist country in the world, and all kind of legal things will ramifications, and there will be revolutions. So this has to be stopped. This has to be ended. This business ki caste is racism cannot be allowed in India, is my opinion. And anyone who is promoting that is actually being very dangerous for India. Right. Mangesh Desai, future in the hands of Justice U. Lalit. Either he recommends the correct person as the next CJI, or he retires without naming anybody and put the ball in the government court. Well, that's not something for us to speculate on. Next. AK, sir, instead of refuting Ajanta Subramaniam, some of the IITs and IIMs gave her the platform to speak about the book. Are we doomed? So this is true. Yeah, IIT people in IIT Madras told me that IITs में भी बहुत leftist लोग हैं. So lot of these leftist people invited Anjana Subramaniam to promote her book, but the people on our side were not given a chance to respond. तो मैंने उनको बोला कि you please invite her again and invite me to come and debate. I would want to debate. But Ajanta Subramaniam is not interested in debating. She will just go and be supported by the left-wing people, give a lot of lectures and bilkul jhoot moot yahan wahan propaganda lagakar, they will go away. And somebody like me, they will not allow. This is very unfair. And this is, justice should point it out. We have to be fair. We have to be honest. Both sides should be represented in any dispute. And so, to be fair, he should champion free speech and get rid of this cancel culture. And he should say that in every debate, both sides have to be represented. If somebody has a proposition, then those who are opposed to it should also be given a chance. This is the kind of justice I would like to see. Quite right. This is Bhayanak. Matu chaos. Moth chaos. What Indian counter theories have developed come handy while arguing in court, while delivering judgments in academia against these insidious theories? Hindus don't have Sharia or China firewall. So I don't know the question. Well, I think it's a comment. No, he wants to know what Indic counter theories have we developed. So I think what we are talking about is actually a counter theory only. Of course. I think it's basically if you have logic and reason it's very easy. If you use logic and reason, you can easily bring down critical race theory as it's applied. So that's all. It doesn't need anything new. But they have a mechanism of what Rajiv ji talked about, which is cancel culture. So because you are an oppressor, you don't get to speak. So that's cancel culture. So essentially, you don't get to speak because you are part of the problem. And anything you say to support it, you're supporting systemic racism, the systemic casteism, the whole structural bias upon which you have gained privilege. You're using that very system to make your argument, and therefore you don't get a platform to speak. So you can use logic, but logic itself is considered patriarchy, just like the justice was saying, right? Lived experience matters. So subjectivity basically trumps objectivity. So you can use objectivity and rationality to bring them down, but you are cancelled because you're not allowed to speak. What would be the lived experience of, say, somebody like a Chirag Paswan? I don't know. So I don't know him. So I won't. Chirag Paswan is son of Ramvilas Paswan. And Ramvilas Paswan is. So that's something you should discuss because, his mother was a Brahmin, and Ramvilas Paswan married a Brahmin girl, second wife. Chirag Paswan is his son, and educated in English medium, child of privilege. So where would he fit into the scheme?
in the I don't know. intersectionality scheme? I don't know. So, Vijay? I think if you're an ally, so there's something called an ally. Like the justice would be considered an ally. He could be a purebred upper caste of some sort, but it doesn't matter as long if you're an ally. So if you agree with them, it's not just enough to agree with the critical race theory proponents, the woke I people. don't know whether you know Chirag Paswan is a scheduled caste. Okay. Right. I assumed that, but so essentially, so it is for people who agree with them that they are either victims or people who are allies who are again giving a voice to the people who are victims. If you're neither of these, if you're neither an ally nor an actual victim, then you're the outsider that deserves cancellation. So even in fact, some like some African Americans who oppose critical race theory are not considered victims. That's the other side of this whole thing. So if you have a Dalit who says this is all bunkum, then that Dalit is acting out Brahmanism. So he's been so oppressed that he doesn't even know he's oppressed. So there are these kinds of supplemental theories that they have. So as long as you agree, you're a Dalit and you agree with this, then you're in the fold. If you're a Dalit and you disagree with this, then you will also be cancelled. So it has nothing to do with whether you're Dalit or by that logic, an IS officer who is come through reservation for scheduled caste, and he takes a scheduled caste seat reserved for scheduled caste for his son, then he is not acting out of privilege, even though he may be depriving someone of lesser means from his own caste of that seat, but he still remains an ally, is it? So If you- I think okay, go ahead. so I think one of the problems is कि ये privilege को by birth मानते हैं. चाहे if you are son of a Dalit and this Dalit was a billionaire, there are billionaire Dalits, by the way. You are still a Dalit. You are still a Dalit. You are still a Dalit. And so it is by birth आपको Dalit status मिल गया by birth. And you may be son of a Brahmin who is a poor fellow. There are a lot of poor Brahmins in Orissa, Bihar, and so forth. There are poor Brahmins. And if you are son of a Brahmin, you are still considered elitist. So this is a by birth designation and not by your personal individual status. This is a very big flaw that they are not interested in talking about at all. You talk about it. हमारी book में ये chapter एक पूरा chapter है 6. वो इसी whole chapter is the biggest chapter in the book is a response on the Indian social theory. So India में जो social society है, social structure है, वर्ना जाति कास्ट उसकी सारी जो हिस्ट्री है क्या नहीं है उसके ऊपर बहुत फैक्ट्स दिए हुए हैं. Chapter 6 is almost like a book by itself. So in ancient India, one could change one's varna, even according to Manusmriti. But yes, in the modern America, it's not possible. No. Okay, let's move on to the next question. Abhay, how to counter people who blame previous generation of upper caste or casteism? Failed to convince my own family members that castes were created by the British Empire. So this is a job of the education system. I mean, we cannot convince 1.4 billion people and convert them. ये तो education का काम है. गवर्नमेंट के पास एजुकेशन मशीनरी है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, कल्चर मिनिस्ट्री है, HRD है, कितना कुछ है, एंड दे हैव थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ फंडिंग, लैक्स ऑफ स्कूल्स, कितना कुछ उनके पास है. तो इट्स नॉट समथिंग द थ्री ऑफ अस कैन टेक ऑन. द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डू. It is a government job. They have not changed the NCRT वगैरह. They have not come up with the correct history. So this is the problem we are having. Next. Shreyas Achar. Could Chandrachud potentially be a CIA plant sent to dismantle the last bastion of meritocracy in India? That's a speculation, Shreyas ji.
I don't think anybody can comment on that. That maybe IB can comment. And if IB had commented, then he would not have been selected as a High Court judge. So as far as that is concerned, I guess he is clear. Adventure time, all non-Christian lands must be evangelized. Now all non-woke minds need to be awoke. Is this Church 2.0 from Rome 2.0, Harvard being Constantine 2.0? So there's a section in this book called the Church of Wokeism, and the whole parallel with the church and wokeism, kya unka dogma hai, who are the victims, what is the equivalent of original sin, all the church, the different components of what constitutes the church, the structure of the church, you find parallels in wokeism. So it is totally like a dogmatic, faith. There are high priests who are always right and you cannot challenge. There is the equivalent of Bible, which is not refutable, जो उनके लोगों ने लिखा है wokeism का, and anybody who disagrees is a heretic. He is an outsider. He is not has no credibility. So जो कुछ भी चर्च में खूबियां हैं, स्ट्रक्चर है, वैसे ही ये wokeism में भी है. जी, next. Rushi Patel. Namaste Rajiv ji and Vijayalakshmi ma'am. At what level neo-Marxism and equality of outcome accepted by American society, this is still being debated and resisted in the US as well? So, yes, this is being debated and resisted in US as well. This is one of the big arguments between the Democrats and the Republicans. Wokeism, the Republicans are resisting. They don't want wokeism taught in class. The far left of the Democratic Party, who are called progressives, who apne aap ko progressive kehte hain, that is the name, brand name, they are the ones who are pushing it. And so what has happened is with the rise of Biden has brought more progressives, more leftists into the Democratic Party, because he's not a strong person who can make a centrist. पहले जो Democratic leaders थे, they were centrist, मतलब they would balance the left and the right, inside the Democratic Party. But now it has been allowed to go to the extreme left, and there are a couple of these Muslim ladies who are so radically anti-India and anti-Hindu. They are part of this whole cabal. Some Muslims are some Muslim congresswomen are part of this cabal. They are trying to have laws against Islamophobia and things like that. So if that law were to pass, then we cannot even criticize Islam. It would be a violation of American law worldwide. ऐसी बात है. So, the Democratic Party has taken things too far. And so the Republicans are fighting back, and there is this big civil war, intellectual civil war going on in America. In this book, we use the term breaking America. Just breaking India tha. Now there is also breaking America happening. I also think that the equality of outcome issue in America, it's very interesting. If you look at, we have gender fluidity, like you can be male in the morning and female in the evening. Similarly, you have race fluidity as well. So Indians and Asians are considered white for college admissions purposes because they're doing too well in colleges. So they are not people of color or minorities. So what they, like University of Maryland said Asian, and they put in bracket white. So they come along with the white. And these are called adjacent, there's some term like that, adjacent categories, like adjacent to white. So anyone who's enacting whiteness is considered, they call it adjacency or something like that. And they are also considered white. So Asians are considered white, very convenient for college admissions purposes. So that the outcome can be made equal in terms of how many people they admit. Because in the United States, you have affirmative action, but you do not have set quotas like how you have in India. So there is fluidity in race as well, because Asians can be white. Okay, white in the day and black in the night. Okay, D Singh, thank you, D Singh ji,
for your help. For public record, Chandrachud, a Woker, seems aligned with the global leftist Marxist ideology. How about nominating him to ICJ, not CJI of India? Well, that's his option. That's not our option. He has to opt for ICJ. Jahangir Gotla, should the brain drain be reversed, English language be barred, things improved in India to prevent folks leaving? Should there be an absolute ban of every ideology favorable to the collective West? I mean, I don't have any such authority. I cannot comment on it. But it's a even whether you believe yes or no is of no consequence because it's not likely to happen. It's not a practical thing कि ऐसे इंडिया में हो जाएगा. So there's no point in talking about it, in my opinion, because it's not a practical idea. Next. Ishwar Chandra Vidyasagar, STG, Rajiv Vidyaji, Pranam. How are these elites so easily manipulated? Somehow leftists have been successful in making patriarchy Brahmanical. So they are well organized, and our ecosystem is broken into ecosystem. सबकी अपने अपनी अलग-अलग चीजें हैं. We are not coordinated. There's no leadership from higher up. Some kind of a big, Vedic or Hindu or patriotic think tank could have unified everybody and taken on many projects to change textbooks and history and re-educate journalists. I mean, the amount of work to be done is very large scale, and it requires strategic thinking, long-term strategic thinking. It requires resources, and nobody has taken that up. Our billionaires who have the resources, any one of them could have changed the whole Indian scene in the last 8 years, but they are busy funding Harvard rather than creating a resource. They have the money. Rather than creating some kind of a structure that would help us, they are actually funding the wrong side. So, this is very sad. Also, I think parents don't educate their children, give them a grounding on Hindu dharma or from in civilizational thought. So it's easy when youngsters are not grounded and don't have a sense of who they are. It's easy for others to sway them and brainwash them and indoctrinate them in whatever Marxist flavor of the day ideology is. So there is that as well. Okay, Shivanand. Does the book The Caste of Merit provide any statistics to support their claim? If yes, shouldn't the IITs respond if those stats are incorrect? No, there is no statistics in this. It's very interesting. It's all based on a random story here and there. एक था फलाना आदमी, उसने मेरे को ये कहा वो कहा, और एक और था, उसने ये कहा वो कहा. Most of the chapters got story of one or two anecdotes, random, anonymous people you can't verify, and no data, no statistics. Very strange. This is one of the things that the IIT professors and faculty, which I was discussing 2 days ago, I was discussing this book with them, and they were very happy that I'm discussing it because nobody has, nobody until our book came out, nobody has responded to this book. There are so many rich IIT people in Silicon Valley. There are, tens of thousands of IIT graduates and so much government money and so many ministry people and IIT export and all that. Kitne log hai who are affected by such an attack, but nobody responded. And our book is the first very systematic response. We have stuck our neck out. I'm not even an IIT guy, but we've stuck our neck out to defend them. Right. Well, I think that brings us to the end of the question answer session. And I have to thank all the viewers, and I have to thank Rajiv ji immensely, and also Vijaya ji for making this a very, very interesting discussion. And I'm sure this could be a path-breaking discussion. Thank you very much. Thank you. Thank you. Jai Hind. Namaste, everyone. And please buy our book, www.snakesintheganga.com. It's available on Amazon. It's available in bookstores. Please buy, because if you support us, we feel encouraged, and the message goes out to the opposing side
that these people have to be taken seriously. They cannot cancel us because you are reading our book. As long as you are supporting our book, it becomes more difficult for the opposing people to cancel us. Thank you very much. Namaste. Absolutely. And Snakes in the Ganga review is very much there on the Jaipur Dialogues in an earlier episode with Rajiv ji and Vijaya ji. So thank you all very much. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you very much.